Welcome to the topic for formatting and quotations in HTML basics. In this topic, we will have discussions on formatting the HTML elements by using these many tags. As you know that if we create a new project or the new document using the VS Code, launch the VS Code, create a new file index.html, toggle it, emit abbreviation, okay, formatting and quotations. Okay, okay. In this topic, for example, if I am going to have H1 and formatting and go for open the live server, देखिए ये आपको आपका पेज यहाँ पे नजर आ जाएगा फॉर्मेटिंग के अंदर। अब फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम कहते हैं कि जी हमने बोल्ड बी फॉर बोल्ड करना है। ओके, यस, हम बोल्ड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग कहते हैं कि ई का टैग लगाएं और फॉर एग्जांपल हम लोग नेट के ऊपर जाते हैं और नेट पे जाके कुछ चीज़ सर्च करते हैं, दैट 70-480, ठीक है, कि इनफैक्ट दिस इज द हम HTML सर्च कर लेते हैं, हमें कुछ ओके, दिस इज द some definition from the net। अब हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जब भी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML, जैसे ये नजर आ रहा है, द hypertext markup language or HTML is the standard markup language for the document designed to be displayed। अब हम ये चाहते हैं कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ना ये बोल्ड हो जाए, ये एम्फेसिस हो। इसको क्या करेंगे फिर? इसको करने के लिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जैसे ये है, इसके गिर्द हम लोग बी का टैग लगा देंगे। देखिए ये बी का टैग बनाया, एंडिंग टैग यहाँ तक लाके ख़त्म कर दिया। आप अपने पेज को देखें, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि स्टाइल, थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं और इसको मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट फैमिली विल बी द, ओके, मेक दिस वन, ठीक हो गया। एंड अच्छा, बजाय इसके कि मैं फ़ॉन्ट फैमिली सिर्फ इसकी रखूँ, हम इसको यहाँ से कट करते हैं और ये फ़ॉन्ट फैमिली सारी बॉडी पे अप्लाई कर देते हैं, सारी बॉडी पे यही फ़ॉन्ट फैमिली आ जाएगी। एंड हम लोग यहाँ भी ये करते हैं कि पी को हम लोग स्टाइल देते हैं और इसको कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो पैडिंग है ना ओवरऑल, दैट विल बी अबाउट 30 पिक्सल्स की पैडिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं कि दैट्स माय H2 HTML, दिस इज द, और मैं कहता हूँ कि इसकी टॉप और बॉटम की जो पैडिंग है वो मैं कुछ नहीं देता, लेफ्ट राइट की जो पैडिंग है वो मैं 30 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है। एंड सिमिलरली मैं इसको कहता हूँ कि स्टाइल पैडिंग लेफ्ट विल बी द 30 पिक्सल्स। तो ये देखें, ये सारा इधर आ गया। ये सबसे पहला टैग हमने अप्लाई कर लिया कि हम कहते हैं कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML और HTML, ठीक है, इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर द डॉक्यूमेंट्स डिजाइन टू बी डिस्प्लेड। अब हम लोग ये चाहते हैं कि इस डेफिनेशन के अंदर कुछ चीज स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड टेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड आई फॉर द इटैलिक टेक्स्ट। आई इटैलिक करना है, तो इटैलिक करने के लिए मैं कहता हूँ लैंग्वेज सच एज जावास्क्रिप्ट। अब मैं कहता हूँ कि ये जो जावास्क्रिप्ट है और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं, इनको मैं, और HTML, इनको मैं क्या कर दूँ, इनको मैं इटैलिक कर दूँ, ठीक है।
तो इनको इटैलिक करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि वेयर इज जावास्क्रिप्ट, दिस इज द जावास्क्रिप्ट, कट इट और इसके ऊपर आई का टैग लगा दें, दिस इज इटैलिक, इटैलिक। उसके बाद फिर हम कहते हैं CSS कैस्केड स्टाइल शीट्स, इसको इटैलिक कर दें, कैस्केड स्टाइल शीट्स, ओके। एंड सिमिलरली फॉर HTML इटैलिक कर दें, जैसे ठीक हो गया। तो ये देखें, ये हमने अपने 3 टैग्स अप्लाई कर दिए। EM इज द एम्फेसिस, M मार्क इज द मार्क टेक्स्ट एंड स्मॉल। लेट्स से मैं कहता हूँ कि दिस इज अ वेब ब्राउजर, मार्क, दिस इज अ मार्क टेक्स्ट, ओके, वेब ब्राउजर। उसके बाद हम कहते हैं स्मॉल, एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि, और मैं ये स्टाइल यहाँ से उठाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ड्रिंकिंग वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस डेली, 8 glasses या 8 glasses पर डे, ठीक है, ये आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो चीज़ है इसके अंदर मैं फॉर्मूला देना चाहता हूँ वाटर का, दैट इज H2O। इट विल बी लाइक दिस, बट मुझे पता है कि टू जो है ये कभी भी इस तरह नहीं होता, टू हमेशा सबस्क्रिप्ट में आता है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे कट करें, जैसे कहीं सब, इट विल बी सबस्क्रिप्ट, ओके। इसी तरह हम सुपरस्क्रिप्ट में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से solve the following equation using any method of your choice, okay। एंड जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को मैं कहता हूँ कि दैट इक्वेशन विल बी, इस इक्वेशन को मैं देता हूँ दैट इज x2 minus 2 cos x minus 9 equals 0, okay। We know that x2 is the square of x. What should we do? We will write it like super, that is superscript. Shouldn't place any gap between these two. This will be, okay. This is a superscript, this is a subscript, this is mark, this is italic, this is strong EM, okay। Next is कि हम लोग ये कहते हैं कि deleted text, inserted text, deleted and inserted कैसे आएगा, deleted ऐसे आएगा, don't try to use internet for solutions, okay। If we want to internet for the solutions, don't try to use internet for the solutions, okay। And
use your intelligence for solutions. Insert use your intelligence for solutions. This is an inserted text, this is deleted text, this is superscript, this is subscript. Okay, and that's all for the HTML formatting. uh, Next is HTML quotations. HTML quotations are first of all is the block quote. Block quote means p tag, okay, and okay, block quotes. Okay, this is a block quotes. Block quotes, first of all, block quote. What you had. On through gates. This is a block text. Okay, and Q. If I write Q, example data for testing, it will just put the quotes around the text. Okay, and next for the abbreviation, these are just the abbreviation, these are just the short forms. For example, title Pakistan, Digipak, Pakistan. Okay, these are all the things, these are just citation, and this is the video is for the directions, if you want to change the direction or not, direction of the text. For example, this is the text and I want video direction, LTR, left to right. Okay, and if RTL, right to left. This is a total different thing. Okay, these are all the nitty-gritty details regarding the formatting and the quotations. Do practice these things so that we can move forward with our next topics. Thank you.